So students, you are welcome in the class of computer, in which we have started our chapter number 10, entitled by artificial intelligence. So far we have seen what is artificial intelligence, what are the different aspects of intelligence, what is the application of artificial intelligence, and yes, we are now discussing how social media networking is using the AI technology. So let's start with whenever we are talking about the social media networking, or we can say the social campaigning of anything, so we are concerning the personal information only. What is the Facebook? What is the Instagram? If you will say, then it's just a personal thing that you have, right? You post your photos, you post your videos, you comment to each other. So this is kind of a personal thing, student. Mark my point. So the very basic phenomena that AI uses from your social networking is that it just personalize your experience, right? It's personalize your experience. How? Because it suggests your behavior, it suggests your activities to the company, so they can send you the messages, so you can just suggest you something. Okay, if you are just take my example. If I am teacher and I will post a teaching related thing on my Facebook, on my Instagram, or I will post some videos of teaching, then Facebook will capture, then AI technology will capture that this person is interested in the teaching field, right? So if it recognize that I am interested in teaching field, then it will send me the messages. It will forward my personal information to the company, so they can approach me. Just like let me share to the real instance which happened with me. Nowadays, I'm getting around 2-3 calls per day, in which they are promoting their business, so that I can buy online platform for my coaching. जब भी मैं फोन उठाता हूँ, बस एक ही क्वेश्चन आता है कि यस सर, डू यू ओन एनी बिजनेस, डू यू ओन एनी इंस्टीट्यूट। तो वहां से उनको कैसे पता चला कि मैंने एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है, कैसे पता चला कि मैंने एक ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग के, जैसे व्हाट्सएप पे भी मैंने जो अपनी चीजें डाल रखी है, इंस्टाग्राम पे भी जो मैंने अपनी चीजें डाल रखी है, वो किससे रिलेटेड है स्टूडेंट्स? मेरी टीचिंग से रिलेटेड है। तो अभी मेरे को जितनी भी कॉल्स आते हैं, वो यही आते हैं कि आप हमारा सोशल मतलब जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर लीजिए, या आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर लीजिए, ताकि आप अपने कोचिंग को एनहांस कर सके। आखिर मैंने तूने नंबर प्रोवाइड किए नहीं, बट उनके पास नंबर जा चुका है, उनके पास मेरी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। किसके हेल्प से? सोशल की हेल्प से। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया नेटवर्किंग। ओके, so these type of analysis use essential in personalized campaign. AI powered tools that can be utilized to analyze, manage, and optimize paid ad campaigns, right? So the tools helps to find best channels to deliver ads to your preferred audience. So if we are using social networking, if we want to use the social networking, then we can use the AI technology, right? So social networking sites such as Facebook and Instagram, the example which I given, use ANN to highlight faces and uploaded pictures. Pinterest display image by learning the user's choice and search keywords. Snapchat uses AI based camera lens to detect motion and apply animated effects to user's face. देखिए ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है, ये आप सभी को पता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में देखिए, फेसबुक क्या यूज करता है, अपना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता है, यानी कि वो इतना ज्यादा कनेक्टिविटी को यूज करता है, इतने नेटवर्क्स को यूज करता है, जिससे वो हमारी एक्टिविटी को ट्रेस करता है, जिससे वो हमारे एक्टिविटी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम की, तो ये इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट की, तो ये लोग अपने क्या करते हैं, पिक्चर्स को ऑब्जर्व करते हैं और डेटा इनहेरिट करते हैं इनमें से। स्नैपचैट तो आपने देखा ही होगा कि आप अपने सुंदर सुंदर से फेसेस लेकर के आप उसमें क्या कर सकते हैं, डॉग एंड कैट्स के कैसे भी फिल्टर बना सकते हैं ना। आप लोगों ने स्नैपचैट यूज किया ही होगा, तो स्नैपचैट में भी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसका मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। उसमें आपका फेस वही है, बट चीजें बदल रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट? अब हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग की। ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने आपको बता ही दिया, दीज आर को रिलेटेड पॉइंट्स है ना। ऑनलाइन शॉपिंग में भी क्या करते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट आपको वही सजेस्ट करेंगे जो आपने प्रीवियसली कुछ सजेस्ट सर्च किया था, आपने जो कीवर्ड्स डाले थे, या जो आपने प्रीवियसली परचेज कर चुके हैं आप, तो उसी के हिसाब से वो आपके ऑनलाइन शॉपिंग में सजेशंस देते हैं। एज वेल एज वो आपके क्रेडिट कार्ड और अदर ऑनलाइन ऑप्शंस को सेव करके रखते हैं।
तो उसी के हिसाब से फिर वो आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ भाई आपने लास्ट टाइम यूपीआई पेमेंट किया था, तो वो आपका क्या कर देते हैं, प्रिफर्ड पेमेंट ऑप्शन भी आपका यूपीआई कर देते हैं। हालांकि दे गिव द वन अल्टरनेटिव मोड आल्सो कि आप अपना चेंज कर सकते हो पेमेंट मेथड, बट जो आपका बाय डिफॉल्ट मेथड होगा वो यूपीआई आएगा, अगर आपने प्रीवियसली 2-3 टाइम्स आपने यूपीआई से पेमेंट किया होगा, है ना। तो ये कुछ आप लोग चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके आसपास ही एआई है ना। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स में तो देखिए बेटा एआई है ही, आपके कैमरा के अंदर आ जाता है आपका स्मार्टफोन के अंदर एआई। फिर अब अगर अपने बात करें जो अपने बोलते हैं, वॉइस टाइपिंग जो है, वॉइस बेस्ड जो सर्च है, वॉइस बेस्ड सर्च हो गया, वॉइस बेस्ड टाइपिंग हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एआई के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और फिर आपकी जो ये वर्चुअल असिस्टेंट एप्स जो आते हैं, गूगल असिस्टेंट ऐप हो गया और भी अदर कुछ एप्स आ चुके हैं, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्मार्टफोन, हाउ स्मार्टफोन आर यूजिंग द एआई कॉन्सेप्ट, राइट। and Google Lens is also there. स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट्स, स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट्स अपने बहुत बार इस पे बात कर रखी है ऑफलाइन क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी, कि जो अलेक्सा है अमेजन का, गूगल असिस्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टाना है, ठीक है। कॉर्टाना के बारे में आप लोगों ने सुना होगा बेटा, ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में अवेलेबल होता है, जिसके अंदर अपने सर्च कर सकते हैं, एज वेल एज अभी अगर आप जैसे कि मेरे पास वीवो का फोन है, तो उसमें जोवी, JOVI, जोवी नाम का एक वर्चुअल असिस्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि दे कैन टॉक एंड दे कैन कम्युनिकेट विद अस, दे कैन इंटरेक्ट विद अस, नहीं, ये अपनी चीजों को शेड्यूलिंग भी करता है। जैसे कि अभी मेरी सीबीएसई की मीटिंग है, तो सीबीएसई की मीटिंग में क्या करते हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट्स है, जो गूगल है, ये मेरा डेटा, ये मेरा ईमेल लेकर के मुझे रिमाइंड करते हैं कि आपकी 11 बजे मीटिंग है, तो इनका मेरे पास मैसेज 10:50 पे ही आ जाएगा कि प्रवीण त्रिपाठी और मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 11 AM और वट एवर द टाइमिंग्स आर। तो ये इनको कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने मेरा डेटा फेच किया है। तो स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट्स जो होते हैं ये इस चीज में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, रिमाइंडर्स लगाने में। और कई बार तो जैसे जो ये आपके सजेशन आते हैं, जैसे कि मैं टिकट बुक करता हूँ, तो टिकट बुक करने के एक दिन पहले मेरे पास स्मार्ट असिस्टेंट का मैसेज आ जाता है, यानी गूगल असिस्टेंट का, कि ठीक है आपकी कल जर्नी है, और जिस दिन होता है उससे 1 घंटे पहले। तो ये जितनी भी चीजें हैं जो आपको पर्सनलाइज करते हैं, अच्छा देखिए कितना अच्छा लगता है ना, कि माई स्मार्टफोन इज मैसेजिंग मी, माई स्मार्टफोन इज रिमाइंडिंग मी दैट माई जर्नी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ओके, एंड माई मीटिंग इज आफ्टर 1 hour। तो ये चीजें जो हम मैनुअली करते थे, ये चीजें जो हम कहते थे ना कि मम्मी आप मेरे को जगा देना, मम्मी आप मेरे को प्लीज याद दिला देना, वो आज हमारा स्मार्टफोन कर रहा है, किसकी हेल्प से, एआई की हेल्प से। डोंट यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग थिंग स्टूडेंट, कि कितना अच्छा चीज लगती है ना, कि वो हमें पहले से सजेस्ट कर रहा है ना। गिव योर कंसेंट स्टूडेंट, अगर इफ यू आर फीलिंग दैट एआई इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, गिव योर कंसेंट। Right, gaming. The most favorite part of every student is gaming, right? गेमिंग में एआई आप लोगों ने यूज किया ही होगा शुरू। चलिए फिर आप लोगों से ही बात करते हैं कि आप लोगों ने गेमिंग में कैसे एआई यूज किया है। चलिए नाउ after discussing the gaming in detail, now we are going to understand what are the limitations of AI. Okay, yes, every coin has two faces. Every coin has two faces, right? So if AI has application, if AI has advantages, then AI has some limitations also. So what are the limitations? So let's understand. Through limitless in application, AI has its own share of limitations at present. At present, right? Okay. So the complex nature of components involved in creation of AI leads to the following limitations. So what are the limitations? First bullet is that creation of artificial intelligence requires huge cost as they are very complex machines, right? It is complex as well as it's very like you can say costly, है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा cost लगता है. Their repair and maintenance require huge cost. Yes, if it's being built in a very high cost manner, then its repair, its maintenance will require huge cost. So it's costly. First limitation, first disadvantage, it is costly, it is expensive. So machines still can't experience emotions and moral values, which we had discussed. Okay, so they perform what is programmed and cannot make the judgment of right or wrong. Okay, unlike humans, artificial intelligence cannot be improved with experience. They cannot be improved with experience. They can only observe it, but they cannot extract exact situation in which human will behave and in which that device will behave like. So AI can work with large amount of data but cannot process it in the same way as human do.
Okay, so they might store the very large amount of data, very large amount of information, but they cannot process it as similar as to human. Okay, so it's still we are working on the artificial intelligence, and there are some fields are remaining in which we have to work as a programmer, as a scientist, for improving the AI experience. Okay, so what are the threats from AI? We have understood the myths about AI. Now we are discussing the threats from AI. It is also correlated with each other. AI is developing with such an incredible speed. Sometimes it seems magical. Yes, I found it magical, really. There is an opinion among researchers and developers that AI could grow so immensely strong that it would be difficult for humans to control. What we had discussed in offline class also, that if it will develop so fastly, or you can say very rapidly, then it may be, mark my point, it may be threatful in the future. An AI program that recognizes speech and understands natural language is theoretically capable of understanding each conversation on emails and telephones. Mark my point, students. If it is recognizing our speech, if it is recognizing our natural language, that it is threatful. How? Because it can passes the information, it can spread our information, it can copy our speech. You can say the pattern. Okay, so it may be threatful in future. AI system have already started replacing and human beings in few industries, just like Parth told us. It should not replace people in the sectors where they are holding dignified position, which are pertaining to ethics such as nursing, surgeon, judge, police officer, and etc. अब ये कह रहा है कि ऐसे डिग्निफाइड पोजीशंस जहां पर जज उसकी इंटेलेक्चुअलिटी काम करेगी, पुलिस ऑफिसर का उसके सिचुएशन के हिसाब से वो क्या एक्शन लेता है वो काम करेगा, सर्जन वो एक अलग तरीके से उस एक बॉडी पार्ट को ट्रीट करेगा, एक नर्स अलग नर्सिंग करेगी। बट ऐसी जगहों पर हमें एआई को इंट्रोड्यूस कम से कम करना चाहिए, मार्क माय पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इवन जजिंग में और पुलिस ऑफिसिंग में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमें एआई की, मतलब उसको एज अ लीड रोल तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। सपोर्टिव या असिस्टेंट रोल हम दे सकते हैं एआई को, बट उसको लीड रोल तो हम नहीं दे सकते। सो दिस इज द थ्रेट। The self-improving AI systems can become so mighty than humans that could be very difficult to stop from achieving their goals, which may lead to unintended consequences. दैट मीन सेल्फ इम्प्रूविंग जो एआई सिस्टम है ना, सेल्फ इम्प्रूविंग अपन ने देखा था, जिसके अंदर वो डेटा को ऑब्जर्व करके कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है, तो कई बार इतना अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे, कई बार ऐसी चीजें भी रिएक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो हमारे गोल्स को, जो मतलब वो गोल्स अचीव करने के लिए वो चीजें बार बार करते जाएंगे, दैट मे बी थ्रेटफुल फॉर सोसाइटी, दैट मे बी थ्रेटफुल फॉर द अदर थिंग्स। ओके, ठीक है, तो ये चीजें जो है ये आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर हम सेल्फ इम्प्रूविंग एआई सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। Okay, that was very interesting chapter although, and now I will send this PDF from Monday onwards. Yeah, so please take care of yourself